Good morning, children. Today we are going to be doing weighted mean. So we are done with arithmetic mean in all three cases of series, individual, discrete and continuous. We are done with all three methods, direct method, shortcut method and step deviation. Today we are going to go ahead with the second type of mean called the weighted mean. Now in weighted mean, remember there are no series. It's just one particular series. If you look at this side, this is the question, right? This is the question. You get an X column and a W column, right? The very first step is WX, summation of multiplication of X with every value of corresponding W. W is the weight. Weight is the value given to that particular variable. जब ये तुम्हारा column बन जाएगा, the second step is you will do summation of W weights and summation of WX. The third step is, why have I written XW? Because we are trying to understand this is the weighted mean is equal to summation WX upon W. We can always call it summation of XW or WX, one and the same, which is nothing but 745 upon 36, which is 20.69, right? Repeating, first step WX, multiply every X into every W, then you get the total of WX and the total of W. Put the formula WX upon sigma W, which is 745 upon 36, 20.69. I'm giving you two sums for practice. Have a look at them. These are the two sums you have to do. Children, it has been observed, the children are saying that sometimes the sums given to you in arithmetic mean, कोई एक अदर sum का answer match नहीं हो रहा. Children, मैंने भी इनको question form से उठाया, solved numericals नहीं है. कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा आंसर नहीं मैच हो रहा तुम वहाँ करेक्ट आंसर लिख दो, राइट, इन द ग्रुप, क्वेश्चन नंबर, टॉपिक नंबर एंड द करेक्ट आंसर. आई विल चेक विद द अदर्स एंड इफ इट इज द सेम वी विल अज्यूम इट टू बी द सेम. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेथड, दिस इज कॉल्ड कंबाइंड मीन. द नेक्स्ट मेथड इज कंबाइंड मीन. ओके, द नेक्स्ट मीन इज कंबाइंड मीन. यू नो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल है ये, राइट? इसमें कोई सीरीज नहीं है, कुछ नहीं है. मैथमेटिकली यू हैव टू डू दिस. Let us assume there are two classes, class A and class B. I am not taking the name of any class, just class A, class B. In class A, there are about 80 students. Can you see N? N is the number of items, number of children, 80. In this class, we assume this class is to be the first class. The second class, there are 60 students. So, in X class, there are 60 students. The average of the students, out of maybe 100, the average of each child in this class for a particular subject is 12. The average, maybe marks you can say, the average marks of this particular class is 20. अगर मान लो प्रिंसिपल कहती है ए सेक्शन की टीचर को कि मुझे अपनी क्लास के एवरेज मार्क्स बताओ, तो टीचर जाकर बोलेगी जी 12 मार्क्स. बी सेक्शन की टीचर बोलेगी 20 मार्क्स. सिस्टर कहेगी नहीं, मुझे पूरे स्ट्रीम ए और बी, ये प्रिंसिपल कहेगी ए और बी दोनों के एवरेज मार्क्स चाहिए. तो देन इंस्टेड ऑफ डूइंग द एंटायर प्रोसेस ओवर एंड अगेन, वी कैन जस्ट यूज कंबाइंड मीन फॉर्मूला. उसका फॉर्मूला है x bar 1 2. व्हाई इज इट रिटन 1 2? इट्स रिटन 1 2 बिकॉज वी हैव ओनली 2 सीरीज. अगर आपके पास 3 सीरीज होगी तो आप लिखोगे 1 2 3. The formula is number of students or number of items in the first series into its average. So 80 into 12 will give you the total marks. Then you have average of second series with the total of the second series. So n2 x bar 2. अगर एक और series होती तो it would be n3 x bar 3. The whole thing divided by the total number of items, which is n1 plus n2. हमारे केस में क्या है, 80 into 12 plus 60 into 20 upon 140, 80 plus 60. You get the answer 15.43. I'll give you a tip here, children. The answer will always lie between the lower and higher mean given here. 12 और 20 के बीच में तुम्हारा आंसर होना चाहिए. Now, in some cases, what happens is, तुम्हें आंसर दिया होगा, मैंने यहाँ तुम्हें हिंट दिया हुआ है, यहाँ तुम्हें आंसर दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स. सो टोटल वर्कर्स कितने आपके 100.
N1 प्लस N2 आपका 100 है. इस द मीन वेज इज 284. तो उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ आपको आंसर दे दिया 284. द मीन वेज ऑफ 70 वर्कर्स, दिस इज N1, is 290. You have to find the mean wage of the remaining 30 workers. So N2 30 है, x बार 2 डालना है. So आपने ये फॉर्मूला लगाना है, इस फॉर्मूला में आपने x बार 2 निकालना है. तो मैंने आपको 2 सम्स दिए हैं. अगेन एज होमवर्क, एज प्रैक्टिस, I expect you to complete these 2 sums and the sums given for weighted mean.